हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, जो उधमपुर टू श्रीनगर, श्रीनगर टू बारामूला रेल लिंक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको कतरा एंड रियासी को वहाँ में एक ब्रिज बनने जा रहा है, अंजी ब्रिज बोल के, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट ब्रिज होगा, जो कि केबल ब्रिज है, इंडियाज़ फर्स्ट केबल रेल ब्रिज और इंडिया का सबसे पहला ब्रिज है ये। तो एक ये बहुत ही बड़ा बात है हम लोग के लिए कि इंडियन रेलवेज़ में ऐसा होने जा रहा है। तो मैं आप लोग को एक फुटेज दिखाऊंगा, आई होप अभी आप लोग देख रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं आप लोग को अभी एक अच्छे से क्लियरिंग फुटेज दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिए उस ब्रिज का। Konkan Railway, on its mission to bring excellence to Indian Railways, is constructing India's first cable-stayed rail bridge, the magnificent Anji Bridge, which shall connect Katra and Reasi under the USBRL project. Anji Bridge has a single pylon standing at a height of 331 meters above the riverbed. The main bridge having a length of 473.25 meters, ancillary viaduct with a length of 120 meters, the central embankment having a length of 94.25 meters, shall have a support of 96 cables, designed to handle heavy storms or strong winds. The geology of the area is very complex, with highly fractured and jointly cherty dolomite rock mass, slope debris material and steep slopes, making it impossible for an arch bridge to be constructed. Moreover, since the pylon had to be constructed on a vertical slope using micropiles of 40-meter depth all around the circumference of 20-meter well foundation, few unique techniques and equipments were used, namely jump shuttering and pump concreting arrangement was used to increase efficiency. Provide higher safety for workers and save the construction time by about 30%. Tower crane having a height of 205 meters with highest working range of 40 meters and highest load carrying capacity of 25 metric tons was used to transport construction material. The bridge will have integrated monitoring system by means of numerous sensors installed at various locations on the bridge, recording various critical parameters on real-time basis, helping to identify the structural health of the bridge all the time. With the best of technology and brilliance in engineering, Konkan Railway is always committed to work for a better, more connected and smarter India. Konkan Railway, we serve. तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ट्विटर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ट्विटर में ट्वीट किया गया था। आज से करीब 1 वीक पहले ये ट्वीट किया गया था। तो मैं आज आप लोग को ये अपडेट दे रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बहुत देर हो गया, लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा बात है। अंजी ब्रिज जो कि पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज बनने जा रहा है, कनेक्टिंग कतरा एंड रियासी अंडर उधमपुर टू, जैसे कि मैंने बोला, उधमपुर टू श्रीनगर, श्रीनगर टू बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड कनेक्टिंग इनक्रेडिबल इंडिया। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो को आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, एक बड़ा अपडेट। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। थैंक यू।